Good morning, students. Today we will discuss about 7th class social science lecture. So today we will discuss about our new chapter, that is chapter number 2, inside the earth. So what are our objectives? We have to know about the interior of the earth, rock and mineral, types of rock and uses of minerals and rocks. So just like other planet, the earth is beginning around 5 billion years ago was a molten ball of rock. When it cooled down with the passage of time, the heavier material sink down while the lighter material floating up. This gives the earth its present shape. It is dynamic planet which is constantly changing both inside and outside. To know how changes takes place on the earth's surface, we need to study its interior structures. The detailed study of earth has been done by the expert on the earth, the geologist. So जो हमारे अदर प्लानट है उसी की तरह अर्थ भी स्टार्टिंग के अंदर जो 5 बिलियन ईयर अगो है एक मोल्टन बॉल ऑफ रॉक थी. धीरे धीरे इट विल बी कूल्ड डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड हैवी मटेरियल सिंक डाउन विद ए लाइटर मटेरियल फ्लोट अप्स. नाउ एट द प्रेजेंट शेप ऑफ द अर्थ, this process will give at the present shape of the earth. Now our earth planet is constantly changing both inside and outside. जो अभी हमारा अर्थ प्लानट है वो inside and outside constantly change होता रहता है. तो so to know the changes takes place, how these are the changes takes place, we have to study the earth surface, interiorly structures. We have to study its interior structures. The study of the earth has been done by expert on the earth, that are the zoologist. जो हमारे अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? zoologist. Now today we will see the interior of the earth. The earth is made up of several concentric circles with one inside the other. It has 3 distinct layers: the crust, mantle and कोर. तो जो हमारी अर्थ है वो सेवरल कोसेंट्रिक सर्कल से मिलकर बनी हुई है. जैसे ये देखो, हमारा एक सर्कल यहाँ पे, फिर एक इसके ऊपर, फिर एक इसके ऊपर, ऐसे हमारे जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर एक ही होता है उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स. उनसे मिलकर हमारी अर्थ जो है वो बनी हुई है. The distinct layer of the earth divided into 3 parts, that is the crust, mantle and core. So the thin outermost layer is called crust. जो हमारी outermost layer है उसको हम क्या बोलते हैं? crust. This is the outermost layer. This is the outermost layer. We will call it as a crust. Now the layer below it, the mantle. और जो crust के यहाँ पे ये वाली जो है वो क्या रहेगी? हमारी mantle. And the innermost one is the core. So जो ये हमारे अंदर का पार्ट है, this is we will call core. The temperature, pressure and density are most at the core and tends to decrease as one moves from interior to the surface. So जो हमारे temperature, density, pressure है वो core के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं. And as we move from core to crust, they will be decreasing. So जैसे ही हम कोर से क्रस्ट की तरफ आते हैं अर्थ के अंदर से, तो हमारे जो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी है वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज क्रस्ट. सो दिस इज द डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, नॉट स्केल्स. सो दिस इज द core. Core is also divided into 2 parts, inner core and outer cores. Now this part will be mantle. This part will be mantle, and the upper part is upper. This is the upper mantle and this is the lower mantle. And here this small portion, as we know, is called a
क्रस्ट, जो ये हमारा स्मॉल पोर्शन है मेंटल के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। सो हियर द लेंथ इज ऑल्सो गिवन ऑफ द मेंटल एंड कोर, वी हैव टू गिवन द लेंथ ऑफ द मेंटल एंड कोर। नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर एट द कोर, 4300 degree Celsius. Now at the mantle here 3700 degree Celsius, and in between the mantle is 1500 degree Celsius. So the outermost and the thinnest layer of earth is called crust. जो हमारी outermost और सबसे thin जो layer है, मतलब सबसे जो पतली जिसको layer बोलेंगे वो हमारी क्या है, crust. It is about 35 to 70 kilometer on a continental mass and 5 to 7 kilometer on an ocean floors. So its width is about 35 to 70 kilometer on continental mass and 5 to 7 kilometer on ocean floor. The continental mass is mainly made up of silicates of alumina, potassium and sodium. So it is thus called Cl. This is made up of silicates of aluminium and potassium of sodium. So by the combination of silica and aluminium, we will call it as a Cl. The oceanic crust is made up of silica and magnesium. So hence we will call it at Sima, silica plus magnesium. First two word of silica and first two word of the magnesium. So we will call it at a Sima. The crust is just 1% of the earth volume. जो crust है हमारे 1% वॉल्यूम के इक्वल है, अर्थ के 1% वॉल्यूम के इक्वल. सो इट इज ऑल अबाउट द crust. हमारे जो crust का जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनिया एंड पोटासियम ऑफ सोडियम, पोटासियम एंड सोडियम से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, Cl. ये कॉन्टिनेंटल मास को बोलते हैं. और जो ओकेनिक क्रस्ट है उस वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम. सो दिस इज ऑल अबाउट कोर एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो टुडे वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट पार्ट एंड outermost thin layer, that is the crust. So आज हमने crust के बारे में स्टडी किया है. In the next classes we will study about the mantle and the core. So this is the end of your lecture. You have to do on your homework, write about what is crust. आपको crust के बारे में लिखना है and interior of the earth. So जो आपको write करना है वो कहाँ से कहाँ करना है एक बार मैं बता देता हूँ आपको. So you have to write from interior of the earth. जो आपको interior of the earth है इसके अंदर आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखना है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ इन द crust you have to write from here to here and also learn all these things. So this is your 2 days homework and you have to complete this homework. You have to write on your notebook and also learn this homework. So this is the end of your lecture. Thank you.